Good morning, good morning, good morning, champs. Chalo, today we are going to start with inventory valuation lecture number 2. But before starting any session, first we will revise all basic rules of accounts. Chalo, quickly revise karte hain hamare basic rules of accounts. Yes, rules of accounts are divided in two parts: traditional approach, modern approach. Traditional approach talks about beta personal account, real account, nominal account. Personal account kya bolta hai? Jaldi jaldi bolo. Personal account due relationship. Due relationship is debit the debtor, credit the creditor. Debit the receiver, credit the giver. Real account debit what comes in, credit what goes out. Nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Modern approach: asset debit, liability credit, expense debit, income credit, capital credit. Sab yaad hai sabko? Yes, very good. So now in last session we started with the inventory, because today we have to not just complete inventory valuation some problem, but rectification ka that two difficult questions, TYK number 4 and TYK number 3. So today we are going to cover that portion also. Chalo, good morning बोल दो जल्दी जल्दी comment section में. Basic rules of accounts लिखने वाले बच्चे कौन कौन है? Yes, how many of you have completed beta basic rules of accounts? Yes, Om Gupta, as usual, he has written all basic rules of accounts. Komal Preet, very good. Shashank, very good beta. Very good. Good morning, good morning, good morning. Yes, beta Piyush. Good morning, beta. Chalo. Yes, last session में कुछ देखा था हमने. What we have completed in the last session? चलो जल्दी से बताओ. Tell me fast. Yes, चलो. Raw material के लिए which word you are using for raw material? Yes, South Indian students, raw material के word for raw material is, जल्दी से बताओ in comment section. For WIP and finished goods. Finished goods के लिए क्या होता है? जल्दी से बताओ. Yes, tell me fast for raw material, WIP and finished goods. Raw material के लिए which word is using? Beta, you are using the word. Yes, Miss Akshaya. Welcome to ICI classes. Now I have completed your recorded lectures and now I am live. Very good beta, very good. Raw material सबसे तेज आंसर दिया है by Darshika. Very good beta Darshika. Raw material is consumed. Raw material लेता है consume. WIP produce. Very good. And finished goods sold. चलो बहुत बढ़िया बेटा. Raw material, if I open account for raw material beta, how is this going to open? For raw material, to opening stock of raw material, to purchases, by consumption, by closing stock. So how to calculate consumption? Opening plus purchase minus closing. Simple. चलो WIP tell me. WIP कैसे करेंगे बेटा? WIP चलो फटाफट फटाफट बताओ. WIP to balance brought down to opening stock of WIP. So then to raw material consumed आएगा, to wages, to factory overhead. So sorry, direct expense. And then factory overhead. Should I consider administration overhead? No, sir. In valuation, we don't consider administration overhead and selling and distribution overhead. Yes, sir. We never consider that two expenditure while doing valuation. Okay, sir. Yes, understood. Now, by. Yes, beta, by क्या लिखेंगे? WIP produced. Okay. So this is production. And by closing WIP. So production is equal to opening stock of WIP plus raw material consumed plus wages plus direct expense plus factory overhead minus closing WIP. Yes, sir. Now we got the formula. Okay, formula is also logical one. Finished goods. Finished goods में क्या आएगा? Opening stock of finished goods to production of the finished goods by, sir, we are going to sell it. So by COGS and by closing stock of finished goods. So opening plus production minus closing is equal to COGS. Yes, sir. We understood it. Correct, che? All formula remember, beta? And tell me one thing, only last thing I want to ask you, periodical versus perpetual, which is costlier and which is cheaper? Yes, periodical versus perpetual. So how many of you have focused in last session, beta? Let's see. In last session, चलो देखते हैं perpetual versus
periodical. Yes, beta. Arit. Perpetual is costlier. Who wrote very fast? सबसे पहले हमारा निश्चय था. निश्चय भैया, you answered very fast. Perpetual is costlier. Perpetual is costlier. ठीक है. So we understood what is finished goods, what is the opening stock of raw material plus WIP. Yes, everyone is clear with this concept now. Very good, beta. Chalo. So today we are going to move to next part. Now you understood what is cost. Cost is basically divided in two parts: direct expenses, indirect expenses. Direct expense में क्या आएगा? Material, labor, direct expenses. Correct है? Indirect expenses means overheads. Overheads, factory, administration, selling and distribution. चलो, तो ये हो गया अपना ओवरहेड कैलकुलेशन. तो ओवरहेड में which we are going to consider? Administration overhead we never consider, sir. And selling and distribution overhead we never consider. We consider only factory overhead. Indirect expenditure. And what is the difference between direct expenditure? Direct expenditure is incurred on specific products, sir. Write down somewhere. Direct expenditure incurred on specific product, and indirect expenditure is incurred overall expenditure. It's not on specific product. It's not product. It's a period cost. So direct expenditure को क्या बोलते हैं? Direct expenses is called as product cost. Direct खर्चे जो है, direct cost is equal to product cost. Product से related. It's a product cost. Sir, वापस. Direct cost is a product cost. 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 Direct cost is a प्रोडक्ट कॉस्ट. सर याद रखना, ये लाइन को याद रखना है. डायरेक्ट कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस ओवरहेड. ओवरहेड मींस व्हाट बेटा? ओवरहेड इज अ पीरियड कॉस्ट. ओवरहेड क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज पीरियड कॉस्ट. एक एक्सपेंडिचर नहीं है ये, पीरियड कॉस्ट है. ये एक प्रोडक्ट पे नहीं किया जाता है, ये ओवरऑल खर्चा किया जाता है. चलो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. फटाफट लिखो. डायरेक्ट कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट. चलो कमेंट में लिखो. साक्षी गवसजी मला विचारतायत मराठीमध्ये, सर माझे आन्सर्स विजिबल आहे का? हो बेटा, तुझे आन्सर विजिबल आहेत. निश्चय बोल रहा है क्लास के पहले ही मैंने रिवाइज कर लिया था. वेरी गुड बेटा. यस, गुड टेक्निक. इफ यू आर नॉट डूइंग रिविजन्स इन सीए कोर्स, यू आर नॉट गोइंग टू पास. Periodical is cheaper part of sales, perpetual costlier. Okay. Yes. Raj Yogi is saying, sir, my name is Raj Yogi and I am a new student in class from SRO. Welcome, beta, welcome. पूरा इंडिया को बेटा वेलकम है. Yes, those who are attending on daily basis. चलो, वेरी गुड. डायरेक्ट कॉस्ट. मेरे बच्चे जो है ना एकदम प्यारे प्यारे, एकदम फुल स्पीड में आंसर देते. वेरी गुड, फुल एनर्जेटिक है तुम लोग. डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होती है. यस, एवरीवन इज क्लियर. एवरीवन इज क्लियर. आज का अटेंडेंस मैंने देखा ही नहीं. आई जस्ट वांट टू चेक योर अटेंडेंस. आज है क्या कुछ अटेंडेंस आपका? फ्राइडे तो यस. क्या आप लोग फ्राइडे को आराम नहीं करते ना? आज का अटेंडेंस कम है, बताया था मैंने. आज का अटेंडेंस कम है. Those who are not attending in the live session, beta, they are going to suffer afterwards. Live classes बाद में ना students are, मुझे I am getting comments from students कि sir afterwards we are very active in the live session, but when we see recorded one ना, तो वो 2.5 hours is very difficult to sit on one place. So it's better ना, एक्टिवली कमेंट्स करते रहो फटाफट. जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा है बेटा. एंड दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी इन रिकॉर्डेड वन, बेटा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ओनली देन गो फॉर रिकॉर्डेड वन. Otherwise, don't go for recorded lectures. Okay, maximum lectures you try to attend it in the live one. Okay, and feedbacks are very important for each and every subject, not only for my subject. Feedbacks हर subject में important है.
Very good. Very good. Very good, Komal. Sunita is saying always live classes. कोमल बोल रहे आराम हराम है सर. ओके ठीक है सर. अकाउंट्स पढ़कर कामनेस आता है, निश्चय बोल रहा है. वेरी गुड सर. संडे को भी आराम नहीं करते. अरे वाह 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 वाह. निकिता क्या बोलना है बेटा आपको? एक बार देखो आपको क्या बोलना है. व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स क्लास? इकोनॉमिक्स का क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगा. आईसीआई ऑल्सो हैज बेटा, दे नो देयर ड्यूटीज. ओके. हरबाजी सिंह 1:30 1:15 के पहले छोड़ो सर, नमाज को जाना है. यस बेटा, यस आज नमाज को जाना है आपको. ठीक है चलिए आगे. नेक्स्ट. चलो 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 अभी नेक्स्ट सेशन में आ जाते हैं फटाफट. हमने क्या क्या देखा था इन्वेंटरी में? मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी ओवर और मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है, डब्ल्यूआईपी है, फिनिश गुड्स है. सर रिकॉल रिकॉल करो फटाफट 1 मिनट में. रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स. ट्रेडर के लिए ओनली ट्रेडेड गुड्स. ओनली ट्रेडेड गुड्स. ही हैज ओनली वन गुड्स बेटा, ट्रेडेड गुड्स. ही इज नॉट नेवर गोइंग टू purchase any raw material. He's not going to sell any he's not going to sell any raw material. He's going to sell finished goods. He purchase raw material, he converts it into finished goods, manufacture. Trader does not have this inventory. Trader के पास ये inventory नहीं है. चलो. Expenses, direct expenses and indirect expenses. Direct expenses, raw material, labor, direct wages, direct expenses. Indirect expenses is called as production administration overhead. Administration overhead के बाद selling and distribution overhead. ये याद रखना. Okay. Elements to be considered in the inventory valuation. Inventory valuation में आप लोग क्या क्या consider करोगे? So inventory valuation में direct material, direct labor, direct expenses. It's called as prime cost, factory overhead. Factory overhead के बाद administration overhead, selling and distribution overhead, we never consider. चलो COGS का फॉर्मेट आपको पता है सबको. Yes, already covered बेटा. COGS क्या है? मैन्युफैक्चर के लिए WIP, yes वो भी गया, ये भी हो गया. ट्रेडर के लिए हो गया. पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल भी we have finished with. Now today write down in your 100 pages book. 100 pages book completed बेटा. Yes, how many of you have already completed 100 pages की book? चलो फटाफट बताइए मुझे. 100 pages के बुक में लिख दिया क्या? Yes. No, but a custom duty is indirectly you are paying, you know, so it's a part of cost. ठीक है. So now types of product. Types of product. Main product, byproduct. Main product and byproduct. There are two types of product. How many of you finished? Yes, sir. Yes, sir. Completed, 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 completed. Very good. Everyone has completed. 100 pages की book completed ना? Of inventory. Very good. चलो बहुत बढ़िया बेटा. Main product. Let's understand about main product. Main product क्या होता है? चलो जल्दी से देखिए. Main product and byproduct. Byproduct is not intentionally produced. And remember, main product is better you are producing it intentionally. For example, if I'm using better, I want to produce sugar. So I want sugar चाहिए तो हम लोग उसको बोलते हैं sugar cane लाना है. Sugar cane is a raw material and sugar is your main product. Correct है? So main product is sugar. But better remember, after that, suppose if you remember the word molasses. Molasses means what? बेटा it is useful for wine or sorry शराब के लिए यूज होता है ना बेटा. हाँ molasses. You know molasses. Now बेटा it has better costlier product ना बेटा molasses nowadays. But before your intention is not to produce बेटा molasses. Your intention is to produce sugar. So byproduct is not your intention. Okay, sir.
मोलेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में मुझे नहीं पता, पर मराठी में बड़ा मड़ी करके वर्ड यूज करते हैं। मड़ी, मड़ी मतलब वो जो कुछ भी बचता है ना मोले शुगर केन के बाद, शुगर के टाइम पे यूज करके, तो उसको वापस से बाय प्रोडक्ट एक बनता है। बाय प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस, इतना याद रखिए। अभी आप लोग मुझे हिंदी में बताओगे कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हिंदी में बता दोगे बेटा फटाफट फटाफट? चलो जल्दी से बताओ। चलो, तो बाय प्रोडक्ट जो होता है ना बेटा, वो याद रखो, बाय प्रोडक्ट जो है वो इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एंड मेन प्रोडक्ट इज इंटेंशनली प्रोड्यूस। तो देखो आगे, इंटेंशनली प्रोड्यूस जो होगा वो मेन प्रोडक्ट होगा, एंड बाय प्रोडक्ट जो होगा वो इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं होगा। ये 100 पेजेस के बुक में लिखना है। सो जो भी चीज मैं रिपीट 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 करवा रहा हूं, वो चीज आपको याद रखना है। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, बाय मोलेसिस को हिंदी में कौन, क्या कुछ पता है क्या? व्हाट इज मोलेसिस? मरी ही बोलते हैं क्या? मली? ओके। कृष्णा बोल रही है FRO स्टूडेंट, नाउ आई कैन understand Hindi also. Very good. Sir, how to comment in live classes? Adik Jain, where you comment, that is only the बेटा जहां पे आपने ये लिखा हुआ है वही तो है। यस, उत्पाद द्वारा, अरे बाप रे ओम गुप्ता जी कुछ भी बोलते हो आप। हाँ, इतना हिंदी डेंजरस है। तो कॉस्ट, हाँ, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। 10 बार बोलना है आपको, 10 टाइम्स। कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नाउ व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? कॉस्ट वी ऑलरेडी नो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में ओनली फैक्ट्री ओवरहेड, एंड डायरेक्ट में ऑल कॉस्ट। डायरेक्ट में कौन कौन आएगा? मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, यस दैट वी विल कंसीडर। एनआरवी, एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल, रियलाइजेबल मींस कैश इनफ्लो, रियलाइज्ड, रियलाइजेशन अकाउंट, यू प्रिपेयर्ड इट इन फाउंडेशन 11 12 स्टैंडर्ड इन पार्टनरशिप। रियलाइजेशन, व्हाट इज रियलाइजेशन? रियलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ कैश, इसको हम लोग बोलेंगे कैश जो हमें रिसीव होता है। एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल, अरे ये क्या हो गया बेटा? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को एनआरवी, एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पे हमें रिकॉर्ड करना है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट इट, दैट वी आर गोइंग टू सी इट लेटर। बट बेटा रिमेंबर द वर्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर में रिमेंबर एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चलो 5 बार बोलना है। मेन प्रोडक्ट, कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower, cost or NRV whichever is lower, speak loudly, cost or NRV whichever is lower, cost or NRV whichever is lower, cost or NRV whichever is lower. Yes sir, understood, understood. Types of product, main product or by product. Very good. Net realizable value. Yes बेटा, डांगी अतुल भाई, सर आप ही मेरा अकाउंट सब्जेक्ट लेने वाले हो क्या? प्लीज आप ही लो। अरे बेटा ऐसा नहीं, देखेंगे ना, ऐसे देंगी तो दे करेंगे, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। आई विल ऑलवेज थिंक फॉर इन योर साइड ना बेटा। ओके, सो डोंट वरी, मैं लू ना लू, दूसरे भी फैकल्टीज दे आर ऑल्सो गुड, डोंट वरी। चलिए, सो इंटेंशनली प्रोड्यूस सर समझ में आ गया। इंटेंशनली प्रोड्यूस इज वेरी सिंपल, कॉस्ट और एनआरबी विच इज लोअर होता है, इसको हमने समझ में आया, मेन प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट, अनइंटेंशनली प्रोड्यूस, इट इज ओनली रिकॉर्डेड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट कॉस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉस्ट ना, दे डू नॉट हैव कॉस्ट। व्हाई? वेरी इजी रीजन व्हाई दे डू नॉट हैव कॉस्ट, बिकॉज बेटा दे आर नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस, so they have cost but we never consider that cost, it is negligible, so we record it at NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो मेन प्रोडक्ट कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, एंड बाय प्रोडक्ट कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यू अंडरस्टूड दिस? वेरी सिंपल, एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे ओनली बाय प्रोडक्ट, एंड कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर उल्टा सोचने का, मेन प्रोडक्ट विल बी रिकॉर्डेड। यस, ठीक है, चलो। यस,
अरे इमराना सर, हाउ टू कमेंट इन लाइव क्लासेस? जहां पे आपने कमेंट दिया हुआ है वहीं पे आपको कमेंट करना है। इमराना सर, हमको आप ही चाहिए। अरबाज बोल रहा है। पीयूष गुप्ता, अदर फैकल्टी इज गुड बट यू आर बेस्ट। अरे बेटा, सब बेस्ट होती है, अपना अपना टीचिंग स्टाइल होता है। चलिए, हाउ टू फाइंड एनआरवी? यस बेटा, आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड एनआरवी। Okay, so now it is very simple. We understood main product and byproduct. चलो, main product sugar cane से जो निकलता है, sugar is a main product. रे इधर गलती से sugar cane लिखा है. Sugar cane is not a main product. Sugar is a main product. From sugar cane we produce sugar is a main product. मोलासेस से दारू बनती है. अभी आते हैं, yes, 100 pages book. 100 pages book में लिखो ये. Write down, take a screenshot. Take a screenshot. बाद में लिखो। वेट वेट वेट, मुझे जाने दो, मेरा चेहरा मत दिखाओ स्क्रीनशॉट में। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो 100 पेजेस के बुक में आज टुडेज होमवर्क। यस यस बेटा, आई विल टेल यू व्हाट इज एनआरवी। वेट वेट वेट, व्हाट इज एनआरवी? आई एम गोइंग टू टेल यू इमराना। बेटा इमराना, तूने जहां पे लिखा हुआ है ना, वही तुम्हारा कमेंट सेक्शन है। उधर तू जो लिखेगी ना, वो सब लिख के आएगा हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप पे। ऐप पे आप लोग हमें देख भी सकते हो और हमारे साथ बातचीत भी कर सकते हो। ओके बेटा इमराना। Yes, yes, Mohammed. Shoaib, why we record it at cost or NRV, whichever is lower. Now let's understand the concept. Yes. Now, sir, someone asked me logic. They don't ask me, beta, why? Haan, okay, it's okay. We are recording it at cost or NRV, which is lower, but reason why they want. See, now I will tell you the reason. First, we have to understand the term net realizable value. तो सबसे पहले हमें टर्म समझ के लेनी है. What is net realizable value? Let's understand first. For raw material, net realizable value is called as replacement price. Wait, we'll tell you. For WIP and for finished goods. So we have three net realizable value. Now what is net? Net means difference. Net का meaning क्या होता है? It's a difference. Yes, beta, it's a difference. Why it is called as net realizable value? Because it's a difference. Now what is added and what is subtracted, we have to understand that. रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल के लिए रिप्लेसमेंट प्राइस. सर, यू वोंट अंडरस्टैंड रिप्लेसमेंट प्राइस नाउ. आई एम गोइंग टू टीच यू इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन एट इंटरमीडिएट लेवल. मैं इंटरमीडिएट लेवल पे ना ये आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा व्हाट इज रिप्लेसमेंट प्राइस. सो वेट अप टू only 6 months. Okay, 6 months के बाद तो replacement price you will understand it. Don't worry. So next one, replacement white. Yes, intermediate level पे. Work in progress. Yes, yes. I will tell you what is work in progress. But this is also at one level next, that is intermediate. Intermediate में और अच्छे से समझेगा, अब भी नहीं करना है. So at intermediate level. And what about finished goods? Yes, finished goods के बारे में बात करेंगे. Finished goods के बारे में. So see, net answer is there. Net means something which you deducted. Something which you deducted. So net realizable value means selling price. Selling price of that product. Selling price of that product or estimate minus selling expenses. Sir, if you want to sell your flat, एक example दे रहा हूं. You want to sell your product. Yes, without advertisement, is it possible? Without advertisement, no. So I have to give some better advertise in paper, newspaper. Or second one, I may call some broker. That broker will sell on behalf of me. So beta, it is very difficult. Net realizable value means not only selling price. Selling price नहीं है. Selling price में से क्या minus करेगा तू? Selling price में से selling expenses you are going to deduct. Selling expenses you are going to deduct, and that's why it is called as net realizable value. Net realizable value का meaning आपको समझ में आया होगा. Very simple sir. So net realizable value is selling price minus selling expenses. Okay, so selling price minus selling expense. चलो जल्दी से लिख दो. Yes, 100 pages के बुक में. Take a screenshot and write down in comment section what you understood. Net realizable value is equal to, yes, write down in comment section फटाफट. चलो
अंजलि ऐसे नहीं बोलने का बेटा सीए कोर्स में. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस कमेंट ना. कुछ स्टूडेंट बेटा ऐसा देख, कोई भी सब्जेक्ट है ना बेटा बुरा नहीं होता है. अकाउंट्स रहने दो, मैथ्स होने दो, लॉ रहने दो. और देखो ICI also has some limitations. I also know कि डेली 2 hours लॉ पढ़ना या अकाउंट्स पढ़ना by sitting on one place for students it is very difficult. Yes, ध्यान में रखो. एक ध्यान में रखो. Yes, Anjali. Actually, I'm telling your name also on this platform because many students like you, they think that we do not understand other subjects. We cannot sit for more than this. Same thing happened with me. For example, when I started my CA journey at CA foundation level, remember there are some subjects which I really don't like. इवन मैं तो बोलूंगा मुझे सीए फाउंडेशन ही नहीं अच्छा लगा था. आई नेवर लाइक दैट सीए फाउंडेशन कोर्स. हाँ, आई एंजॉयड इन सीए फाइनल बिकॉज माय मैच्योरिटी लेवल गॉट इंक्रीज ना. एट फाउंडेशन लेवल इट इज वेरी बेटा, वी आर वेरी एट बिगिनिंग स्टेज. एंड व्हेन वी आर इन द लर्निंग स्टेज, ऑलवेज रिमेंबर वी ऑलवेज फाइंड समथिंग कि स्टडी किसको अच्छा लगता है आज के दिन पे. यू वांट एंजॉयमेंट, नो डाउट इन दैट. You want, every one of you want enjoyment at your age. But बेटा this age is only, हमारे जब गुरु लोग होते थे या हमारा इतिहास जो होगा आपने कभी सुना होगा कि स्टार्टिंग में जब हम लोग बाल्यावस्था में से ये अगले अवस्था में जाते थे, अभी मुझे एग्जैक्ट स्टेजेस नहीं पता उसकी. पर बेटा हम लोगों को गुरु से नॉलेज लेना रहता था जब हम लोग बालक स्टेज में रहते हैं. यस, और वो जो नॉलेज है ना बेटा, दैट विल हेल्प यू. सी, if you do not have burden of earning, remember that is the best phase in the life. I miss my college days also, I miss my studies also, and once you got बेटा overburdened with your family life, तो बेटा फिर है ना मन में बाकी कुछ करने की चीजें रहती नहीं है. सो फिर एक तो पैसा आता रहेगा बहुत ज्यादा, तो आप लोग एंजॉयमेंट करेंगे. बट बेटा आई एम टेलिंग यू सीए का लाइफ तो ऐसा है ना, वी ऑलवेज देयर बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला तो ड्यू डेट्स, ऑलवेज रिमेंबर रिटर्न्स का टेंशन, क्लाइंट का टेंशन. अरे बाप रे कितना टेंशन. वो क्लाइंट के इधर रेट गिरेगा तो साला अपना लाइफ जिंदगी का झंड हो जाता है. मैं बोलूंगा उस टाइम पे आप देखो क्या होता है. तो आप सोचिए कि जो सीए लाइफ है वो तो बहुत डेंजरस है, पर बेटा वो एंजॉय करना चाहिए. एंड एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एंजॉयज हिज लाइफ. इफ यू आस्क योर एनी फ्रेंड हु बिकम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये स्टार्टिंग फेज में ही इज नॉट एंजॉइंग, बट आफ्टर अर्निंग्स, and this is the better earning. I have done lot of businesses, but I know what earning is from chartered accountancy, white collar earning. I'm not saying other businesses are not good, but बेटा वो जो एक respectful जिंदगी है ना, that is very important in the life. If you want that respectable, आज एटलीस्ट वो सीए वर्ड है ना, आज सोसाइटी में भी जब घूमूंगा तो वो सीए वर्ड है ना, तो भाई ये इसके पास है ना अपने से ज्यादा दिमाग है. ऐसा एक ये होता है चार्टर्ड. और ये हमारा फाइनेंशियल डॉक्टर है बेटा. सब आके रुकता किधर है? एंड ऑन मनी साइड. एवरीथिंग वेट्स ऑन बेटा कम्स टू एंड एट ऑन मनी. एंड मनी का जो डॉक्टर है दैट इज वी आर डॉक्टर्स. तो एक बार आपकी हेल्थ के भाई मैं बोलूंगा कि नहीं, पर मनी जहां पे रहेगा ना वो तो सबको चाहिए है आज के दिन पे, हेल्थ से भी ज्यादा. और वहां पे कौन आपका हिसाब करके देने वाला है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो यू वांट दिस डिग्री और नॉट, यू डोंट वांट, ये यू डिसाइड. सो ये कभी कोमल मत बोलना कि आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट, आई लाइक ओनली अकाउंट्स, आई डोंट लाइक लॉ, आई डोंट लाइक मैथ्स, बिकॉज वी हैव टू पास दैट सब्जेक्ट. हाँ, अकाउंट्स में यू कैन डू आगे की लाइफ आप अकाउंट्स में करो ना, बट अकाउंट्स पे आगे ऑडिट एंड इनकम टैक्स है. अकाउंट्स ये आप लोग करवा के लेने वाले हो. यू आर नॉट गोइंग टू डू अकाउंटिंग बेटा ऑन रेगुलर बेसिस. वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. वी विल टेल क्लाइंट कि यू डू अकाउंटिंग एंड वी विल चेक इट. सो ये याद रखना. एंड टू गेट दैट डिग्री you have to study all subjects and do that study by enjoying it, not by burden. मैं हमेशा बोलता हूं बर्डन लेके पढ़ाई मत करो. ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये फैकल्टी अच्छी लगती है, अरे अल्टीमेटली लॉ सब्जेक्ट आपको किसने भी सिखाया? एनीवन who taught you law, but ultimately, or English or economics भी सीखे, economics भी सीखे, it's okay, you are going to score in that. Daily write 4 to 5 questions of law डेली. ये आपने एक रोज का आपका ये लगा लेना है कि डेली आई विल राइट 5 क्वेश्चंस ऑफ लॉ बाय माय ओन वर्ड्स. फर्स्ट बाय लुकिंग इनटू आंसर एंड सेकंड वन बाय विदाउट लुकिंग इनटू आंसर. डेली 5 क्वेश्चंस यू सॉल्व.
Okay, daily 5 question, next 30 days. Chalo, I would say you will study for 30 days. At least you will study for 25 days, 125 question in 1 month. And when you will get better, normally at the time of beta exam, before 2 months. No, before 2 months study won't help you out. Remember, जो भी स्टडी होगा वो आज के आज से स्टार्ट करो. These 3 months working hard will help you in last 2 months. Those students who are doing last day study or last 1 month study, they are going to fail it in the exam. Daily 5 questions लिखो. सुनो मेरी बात. ईमानदारी से 5 क्वेश्चन. You are not connected by face to face classes, you are connected through this board of studies app. But one thing you have to remember, हमेशा मेरा वर्ड याद रखना, डेली लॉ के 5 क्वेश्चंस लिखने हैं. Only 5 questions apart from account subject. I know your liking is increasing day by day in accounts. Accounts की फैकल्टी भी अच्छी है, बाकी सब्जेक्ट की भी अच्छी है. बट एट द सेम टाइम कैसा होता है कि संकेत सर के साथ है ना, हमारा ये लिखते हो आप लोग कि हमारा एक कनेक्शन बन गया है. बट एट द एंड क्या होता है, आप लोग उसका स्टडी सिर्फ अकाउंट्स का करोगे. इट्स नॉट अलाउड. You have to do all subjects in proper way. And I already given you this timetable: morning law, maths, evening accounts, last में eco pck. Follow that schedule. कुछ टेंशन मत लीजिए. यू आर गोइंग टू पास इन द एग्जाम, बिलीव मी. आज लिख लो. यस, चलो अभी आ जाओ वापस से. सो कोमल, ऐसा कभी बोलना नहीं है, ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है. ओके, चलिए. यस, चलो चलो चलो. एनआरबी हो गया. एनआरबी का मीनिंग सबको समझ में आया? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस. नाउ सी बेटा, सी वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन नाउ. चलो अभी थ्रू क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू. Through illustration 1, I will explain you the concept. ILU 1. Don't expect such question more than 2 marks in exam. Not more than 2 marks. Only in true or false. Akib, I will tell you your answer afterwards. चलो अभी आ जाओ. हाँ, चलो. Surekha Limited deals in 3 products: P, Q, R, which are neither similar nor interchangeable. Interchangeable hoga to we have to do that. Yes, in last session I already told you that interchangeable is very easy or not easy. No, not easy, because it's very difficult. How to go that example of paper, 1 rupee, 1.5 rupee, then beta abda kadabda, understood? तो वो example मैंने already दिया हुआ था. Yes. Yes, Revin, I will tell you afterwards your answer. Surekha Limited को 3 products, neither similar nor interchangeable. At the end of the financial year, historical cost or NRV of a closing stock are given below. Determine the value of closing stock. Such a simple question. Cost or NRV, whichever is lower. So in first question, 38. Yes. Second, P product 38. Now what is cost? Cost which I incurred from my pocket is called as cost. And what is net realizable value? What I'm going to sell it in the market. If I'm going to sell it in the market at 42, and if I'm recording it at 38, my cost is 38. So I should record my inventory. I should record my inventory at 38. Now what is the logic? See. Yes. Now I will tell you the logic. Logic behind it. Listen it carefully. Listen it carefully. What is the logic? Why it is recorded at lower? कीप करने का ना स्टडी में बताऊंगा तुझे. टू परचेसेस, चलो
Yes, conservatism. Satya, very good, beta. Conservatism concept. Yes, today I'm going to explain you what is the conservatism concept and what is the logic behind it. See, I bought one product at 38. I bought one product at 38. Only one product. Okay. At 38. And see, either I will sell it. मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है either I'm going to sell it in the market or second option I'm not going to sell it in the market but I will retain that product. When I will retain that product it becomes closing stock. So one product I want to sell it. Yes, अभी तक सेल नहीं हुआ. So I retained it, and retain means what? It is a closing stock, that one product. Now if that product value, there are three options. That product value in the market is also 38. This is the market price when I'm going to sell it in the market. Okay, and I bought it at 38. So, but obvious, I will record it at 38. 38 is the market price also. 38 is my purchase price also. Sir, you haven't done anything. ठीक है, नहीं कमाया है ये इसमें, ये एक प्रोडक्ट में यस नहीं कोई लेने कोई तैयार नहीं है. No one is ready to buy it at 38, 40 rupees. So I have to sell it at my cost. तो मुझे होता है ना ऐसा कि ये प्रोडक्ट तो ले लिया और वो प्रोडक्ट लेने के बाद समझ में आया यार कोई लेने को तैयार नहीं है, चलो कॉस्ट पे तो कॉस्ट में निकाल दो, कॉस्ट पे तो कॉस्ट पे निकाल दो. ओके, सो 38 पे आई एम गोइंग टू सेल इट. सेकंड ऑप्शन, I will sell it at 41 rupees. My profit margin is 3 rupees. In this 3 rupees is my profit margin. Profit 3 rupees and I'm going to sell it at 41. Okay. And third option, market is very down due to Corona. And now everyone is ready to take, though you bought it at 38, but you are getting that product, selling price is only 35. कितने में आपको प्रोडक्ट सेल करने को प्राइस मिल रहा है? 35 रुपीज में आपसे कोई भी प्रोडक्ट उठा रहा है. ओके सर, आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. 35 रुपीज में ये प्रोडक्ट कोई भी उठाने को तैयार है बिकॉज देयर इज मार्केट डाउन हो चुका है, डाउनवर्ड फॉल है मार्केट में, एंड नाउ योर प्रोडक्ट इज एट 35. Three different situations. This is situation 1, this is situation 2, this is situation number 3. So 3 different situations. चलो अभी मुझे बताओ 3 different situations. And now what happened? 3 different situation gives you 3 different answers. If I record it at 38, my profit will be 0. Okay. If I record it at 41 at selling price, my profit is 3. Situation 2 mein. If I record it at 41, and if I record it at 35, that is a situation 3, and I record it at market price only. These are market price. So this will be 3 rupees loss. My loss will be 3 rupees. Now, prudence concept talks about prudence, or remember the word conservatism. Heavy word hai. Prudence means bhavishya, future. Conservatism is also future. Okay, conservatism, conserve in nature. जैसे मेरे पापा थे, they are very conservative in nature. Conservative मतलब क्या? कि वो खुद को रोक लेते हैं, वो खुद को रोकते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के है. सो वहां से ये वर्ड आया कंजर्वेटिज्म. ओके, सो कंजर्वेटिज्म इज नथिंग बट बेटा you are not recording anticipated profits. What the concept talks about? Anticipated, anticipated profits are never recorded. But anticipated losses are always recorded. Only anticipated losses are recorded, not anticipated profits. Losses. Sir, I am going to sell it in the future at 41. That is future. So you should not record it at 41. So here I will record whatever cost from my pocket. Pocket se kitna gaya? 38. So I will record it at 38. Understood the concept? Now my profit will be 0.
Sir, loss chalega. Loss will is allowed. If I'm selling it at 35 and I bought it at 38, I will record a loss. मेरा loss है 3 rupees. My loss is 3 rupees. Sir, this is future loss. Yes, I know it is a future loss, but record it today. Why? Prudence concept, conservatism concept. Conservatism concept बोलता है आज ही loss को record कर. And therefore, one more concept. Due to this concept, we record provision for doubtful debts. Now, what is provision for doubtful debts? For example, from Nischay is our student RCA foundation का. I am going to receive 500 rupees. निश्चय से मुझे 500 रुपया मिलने वाला है. Now what happened? Nischay hasn't paid me that 500 rupees. My concern about the future, I know Nischay personally. I know he is very, पक्का मारवाड़ी है हमारा. अच्छा, तो 500 rupees जो है हमारा एकदम, he is not going to pay me that. Okay. सर कितना पे करेगा? ए बेटा, मैं कुछ कास्टिज्म नहीं कर रहा हूँ, ओनली दिस की एक एग्जांपल है. भाई मैं भी गुजराती मारवाड़ी में हूँ, पैसा ना ऐसा जकड़ के रखते हैं हम लोग. हाँ, 500 रुपीज. तो मैं भी सोचता हूँ, वही मेरी वाइफ भी बेटा, शी इज ऑल्सो गुजराती, पर उसका हाथ ऐसा है क्योंकि पति के पैसे पे जाना ना, तो ठीक है, ऐसा हो जाता है फिर. हाँ, पर जब भी ऐसा है ना, यस, कभी कभी ऐसा है. अभी मुझे पता है कि हम लोग खाना खाने गए, तो मैं ना सोचूंगा यार स्टार्टर की जरूरत है कि आज भी. बेटा मिडिल क्लास फैमिली से आए ना हम लोग. हाँ, तो ऐसा सोचने वाले लोग हैं, ये ध्यान में रखो. भले कितना भी कमाएंगे पर पैसा ऐसा छूटेगा नहीं जल्दी. सो दिस इज कॉल्ड एज बेटा 500 रुपीज जो है ना, आई नो निश्चय पर्सनली. सो निश्चय क्या पता है, इन पास्ट he never paid me full amount. So I know I have to give discount. Yeah, 500 rupees, though I sold it at 500 rupees, but whenever the time comes for payment after 10 days, 15 days, because he's my debtor now, he hasn't paid me any cash, but he's going to pay 10 rupees less. So मुझे कितने का प्रोविजन करना पड़ेगा? 500 rupees पे 10 rupees का 2% का I have to make a provision. So I will make a provision of 2% in advance. I won't wait. मैं उसके लिए वेट नहीं करूंगा. When निश्चय is going to pay, then I will record it on 31st March कि निश्चय is not going to. My मन बोल रहा है, मेरा माइंड बोल रहा है, yes, this is a provision which I estimate. I know निश्चय personally. I know he is not going to pay 500 rupees. He is going to pay only 490 rupees. 10 rupees का discount he is going to take, and that's why it is called as prudence concept. Don't wait for the future. If you think it is a loss, record it today. If you think it is a loss, you will record it today. This is the concept of conservatism. Got the concept? क्या concept बताता है? Don't wait for the future for losses. Book it today. Sir, in future I'm going to earn profit. No need to record it. No need to record it. Okay, sir. Understood the concept. Yes. Yes, Abhay. Yes, अरबाज. मैडम के बारे में ऐसा मत बोलो, गुस्सा हो जाएंगी मैडम, ठीक है? ओके. यस बेटा, रूहानी, वेरी गुड. चलो. So what is the concept, beta? Understood the concept? So should I record it at 41? No, sir. I won't record it at 41. Why? Because I'm going to sell it in the future. So why I should book it now at 41? This is my future profit. So I won't record. I will record it at 38. So if my selling price is 35, record it at 35. Why? Prudence concept. So answer पे लिखो concept of prudence. क्या लिखोगे इधर? Yes, as per prudence concept, as per prudence or conservatism. Understood the word? As per prudence concept, record anticipated losses, but don't record on question itself. You can write over this anticipated profits. Easy che? Ekdam easy. Yes, beta Avesh, I know that.
चलो दिव्यांशी बोल रहे प्रॉपर नहीं समझा, एक बार हिंदी में बता देता हूँ दिव्यांशी, एक बार हिंदी में बता देता हूँ। चलो यस, देखो बेटा, समझ ले बेटा दिव्या, दिव्यांशी ने पूछा ना, देख बेटा एक बार पूरा हिंदी में समझा रहा हूँ, रिवीजन हिंदी में बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। तो समझ ले बेटा, मैंने एक इन्वेंटरी खरीदी, मैंने एक स्टॉक खरीदा 38 रुपीज में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 38 रुपीज में मैंने कुछ तो खरीदा, चल मैंने एक बासमती राइस खरीद लिया, चल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बासमती राइस मैंने खरीदा 38 रुपीज में, और हुआ क्या मैं जब बेचने के लिए जाने वाला हूँ ना, बेचने के लिए नहीं, अभी तक मैंने बेचा नहीं है, कोई कस्टमर ही नहीं आया, सो इट इज माई क्लोजिंग स्टॉक। पर मैं बेचने के लिए गया तो मेरे पास तीन सिचुएशन है, 38 का कोई भी लेने को तैयार नहीं है, 38 में दे रहे हो तो बोलो, नहीं तो निकल जाते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे बेचना पड़ेगा। दूसरा, 3 रुपए प्रॉफिट है, 41 रुपीज पे मैं बेच दूंगा, दूसरा सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन है कि 38 का लोग बोल रहे हैं नहीं लेना है बासमती राइस, हमने बैन कर दिया है, लेना है तो 35 रुपीज में दे, अरे मेरा नुकसान होने वाला है, इससे बेटर मैं 35 में, ठीक है देख मैं भी सोचूंगा, तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक है, अभी तक मैंने बेचा नहीं है, लोगों की ये डिमांड है, अलग अलग सिचुएशन है। 38 का 38 में बेचने वाले रहेंगे, प्रॉफिट होगा जीरो, उसमें कोई बात नहीं है, पर 38 का 41 में बेचने वाले हो तो 3 रुपए प्रॉफिट होगा, पर कब होगा, जब आप माल बेचोगे। आज क्यों बोल रहा है भाई बेचा बेचा बेचा, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा बचेगा वो 41 पे मत रिकॉर्ड करियो, कितने पे रिकॉर्ड करेगी तू, 38 पे रिकॉर्ड करेगी, कितने पे रिकॉर्ड करेगी तू, 38 पे रिकॉर्ड करेगी, ये ध्यान में रख। दिव्यांशी पूरा हिंदी में समझा हुआ है अभी, तो तू फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो आज ही बोलेगी प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं होता है ना, रुकना पड़ेगा तुझे, अब भी रुकना पड़ेगा, 38 का 38 ही बोलने का, जब प्रॉफिट होएगा तब देखेंगे। समझ में आया क्या, 38 का 38 पे ही रिकॉर्ड करेंगे, 41 में भले माल बेचा गया रहेगा तो 38 का माल फ्यूचर में 35 में बेचने वाले हो, तुझे पता है मेरे माल की वैल्यू कम हो चुकी है, ये जो मैंने आइटम परचेस किया उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, तो 38 की वैल्यू 35 होने वाली है, तो मैं क्यों वेट करूं 38 के तक जाने की, मुझे पता है मैं आज लॉस में जाने वाला हूं इन फ्यूचर, तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, फ्यूचर में लॉस होने वाला है ना, आज ही बुक कर, आज ही बुक कर, 35 रुपीज पे बुक करने का, 35 रुपीज पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेगी, 38 रुपीज पे परचेस करेगी, 3 लॉस अपने आप दिख जाएगा, 3 रुपए का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा अपने आप, यही तो ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कंजर्वेटिज्म। तो तू बुक किस पे करेगी, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 38 एंड 42, 38 पे रिकॉर्ड किया, 29 29 29 पे रिकॉर्ड किया, 17 14 14 पे रिकॉर्ड करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 29 14 81 पे पूरा माल रिकॉर्ड होगा, खत्म हो गया रे, खत्म, सिंपल छे, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, दिमाग में बैठ गया क्या सबके, यस इट्स वेरी सिंपल, यस दिव्यांशी बोल रहे अभी मस्त समझ में आया। कितने लोगों ने हिंदी में और अच्छे से समझ में आता है, टेल मी फास्ट कमेंट सेक्शन में, हिंदी में और अच्छे से समझ में आता है, इससे कितने बच्चे, यस क्या डाउट है आकिब, आ रहे आकिब 1.5 दिन में क्या करेंगे, आप भी क्यों बोल रहा है तू, 1.5 दिन का टेंशन लेके अभी तू तेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है आकिब, रुकना, 1.5 दिन पहले एग्जाम के क्या करना है मैं दूंगा ना आपको, लास्ट डे टिप्स, सिलेबस तो कंप्लीट होने दे, 40% सिलेबस हुआ है सिर्फ, आफ्टर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है ना, बाद में प्रॉफिट होगा तो चलेगा ना बेटा। हार्दिक, तूने क्या लिखा है, सर आपने अभी कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, बट बाद में बात का कौन देखेगा भाई, बाद में देखेंगे ना, जब मैंने ससुर ये तो नहीं देखागा ना, जब मैंने शादी की मैंने क्या देखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके मैंने क्या चेक किया, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी उसके बाद मुझे समझा रहे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अरे वो प्रॉपर्टी कब मिलेगी, पर मैं पहले निकल गया तो मैं फ्यूचर के लिए आप भी बोलूंगा कि मेरे पास चार चार फ्लैट्स है, ऐसा नहीं बोलूंगा ना, ससुर जी का फ्लैट क्या मेरा है क्या, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट माई फ्लैट, इज हिज फ्लैट, मैं कब बोलूंगा, सो अभी से मैं बुक करूंगा, हाउ मेनी फ्लैट्स यू हैव, आई हैव 4 फ्लैट्स, व्हाई 2 फ्लैट्स मेरे, 2 फ्लैट्स ससुर जी के, 2 फ्लैट्स ससुर जी के, क्यों, बिकॉज शी हैज ओनली ही हैज ओनली 1 डॉटर, 2 डॉटर्स, और वो 2 डॉटर्स में वो फ्लैट मेरा है, मैं आप भी क्यों बोलूं, मैं आप भी कैसे बोल सकता हूँ ये फ्लैट मेरा है, आई विल वेट फॉर द फ्यूचर, पहले मैं टपक गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, वो,
हाँ, समझा? सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. यस, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. ठीक है. यस, ट्रू और फॉल्स में आया था कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर. वेरी गुड. हाँ, फ्यूचर में क्या होगा थे वो बाद में देखेंगे. चलो नाउ प्लीज साउथ इंडियन स्टूडेंट, दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड इट. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन. ओके. नो बेटा चंदना जी, Mona ma'am is not in teaching field. She is doing practice. We have our own office. चलिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सर हमारी इस चीज के लिए प्रोविजन बनाया है, अगर वो बाद में रिकवर हुआ. प्रोविजन बाद में रिकवर नहीं होता है, बाद में वो अपने आप फिर. बेटा शालिनी, सी अभी ये देख, अभी क्या होगा देख. सपोज आई विल टीच यू नेक्स्ट ईयर में क्या होगा. सपोज if it is of 38 rupees, बराबर है, purchases is of 38. Remember, now your closing stock, suppose NRV is 35, so you will record it at 35. So you booked a loss of rupees 3 here. By loss 3, correct है, you booked a loss 3 rupees. Next year closing stock becomes opening stock and you will record it at 35. Assume you sold it for 41 by sales 41. So what is your profit? 6 rupees. So this is second year profit. 6 rupees is your profit. And first year loss. So loss 6, loss 3, profit 6, net 3. Net kitna? 3 in next year. So net of 2 years is net profit is of 3. And see the cross tally. You bought it at cost is 38 and selling price is 41. So your profit is 3 rupees. But this 3 rupees, you won't record it immediately. You will record first 3 rupees loss and second year 6 rupees is a profit. तो आपका पहले साल में 3 रुपए का लॉस दिखेगा, नेक्स्ट ईयर में 6 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, मर्ज करके 3 रुपए का लॉस दिखेगा. यू विल रिकॉर्ड इट एट 3 रुपीज लॉस, सॉरी, मर्ज करके 3 रुपया प्रॉफिट दिखेगा. बिकॉज यू बॉट इट एट 38 एंड यू सोल्ड इट एट 41. मतलब 3 रुपयाचा प्रॉफिट झाला हो सर, प्रॉफिट हुआ हमें. ओके ओके, चलो अंडरस्टूड. easy easy easy. So that profit will be divided over 2 years. Okay. चलो अभी हम लोग आएंगे टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट. प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन. व्हाट आर प्रिंसिपल्स? very very important beta, please try to understand these concepts. Interest cost. Beta, we have to record it at same point. देखो बेटा, समझ लो 38 का प्राइस 35 पे गया है, तो मैं 35 पे रिकॉर्ड करूंगा. सी वेरी सिंपल एग्जांपल. सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी. सी आपने परचेस किया था 38 में, पर ईयर एंड पे आपको क्या समझ में आया? ईयर एंड पे आपको समझ में आया मार्केट डाउन छे. 38 का मार्केट 35 छे. ओके, सो 38 का मार्केट 35 है. सो क्लोजिंग स्टॉक आई विल रिकॉर्ड इट एट 35.
मैं कितने पे रिकॉर्ड करेगा 35 पे एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो आई शुड रिकॉर्ड इट एट 35। यू गॉट दिस 35? यस सर। आगे क्या होगा इन नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 35 का जो ओपनिंग स्टॉक है आई विल टेक इट एट 35, क्लोजिंग विल बिकम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, बट नाउ मार्केट गोज अप, ओके, सो मार्केट गोज अप एंड आई सोल्ड इट एट 41 रुपी, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 6 रुपीज। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये जो लॉस है ना, ये 3 रुपीज आप इसी साल में रिकॉर्ड करो। इफ यू नो मार्केट डाउन तो यू रिकॉर्ड योर एंटिसिपेटेड लॉस, बट इन नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंस, आई सोल्ड इट एट 41 एंड दिस इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैंने करना चाहिए, अकाउंटिंग कितना सोच समझ के बोल रहा है, भाई तुम्हें पता है 38 का प्रोडक्ट 35 में जा चुका है, तो करना बेटा लॉस बुक, आज ही लॉस बुक करो, क्यों वेट कर रहे हो फ्यूचर के लिए। भाई यू आर, हाँ अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो झंझट क्यों करने का, पर बेटा यही तो अकाउंटिंग है, इट्स एन आर्ट। एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को मत रिकॉर्ड करो, तो यही तो कॉन्सेप्ट है भाई, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो बनाने वाले ने क्या खूब बनाया कि भाई फ्यूचर में लॉस होने वाला है, आज से ही समझ ले, खुद को समझ ले। मुझे पता है मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग यूएस वाले नहीं है, इंडिया वाले हैं। इंडिया वाले, इंडिया वाले क्या करेंगे, फ्यूचर का प्रोविडेंट फंड अभी से बना के रखेंगे, फ्यूचर के लिए अभी से हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में डालेंगे, तो यही तो अकाउंट्स वाले भी बोल रहे हैं। जो फ्यूचर, जो इंडिया कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पे चलती है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिटायरमेंट के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा के रखते हैं। भाई कल उठ के बेटे ने लात मार दी, बाहर निकाल दिया, तो खुद की कुछ तो जमा पूंजी रहने दो। तो अभी से खुद को सिक्योर कर रहे हैं ना, क्या जो पैसा मिल रहा है उड़ाते जा रहे हो आप लोग, नहीं होता वैसे। आफ्टर बिकमिंग सीए यू विल डू योर प्लानिंग प्रॉपरली, कि ये मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे और मेरे वाइफ का दोनों का मिला के कंपलसरी हम लोग एलआईसी में हर महीने 5-5 हजार रुपए डालते ही डालते हैं। भाई एलआईसी इज वेरी बोरिंग सर, सब पता है मुझे, पर भाई उसके वजह से पैसा भी निकलता है ना, 5-5 हजार रुपए साइड में पड़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर के लिए। सर यूर ऑफ कंजर्वेटिव, मार्केट में डालो ना वो पैसा, नहीं चाहिए भाई म्यूचुअल फंड मुझे तुरंत, मैं सेपरेटली इन्वेस्ट करूंगा। खुद की लाइफ कौन सट्टा खेलेगा, कल उठ के म्यूचुअल फंड डाउन हो गए तो मैं क्या करूं बेटा। एलआईसी में सिक्योर तो रहेगा, मर गया तो एटलीस्ट एलआईसी वाले खुद होके पैसा दे देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। ओके, बस हो गया। नाउ आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेशन वंस अगेन, वॉच इट, और वापस से देख के वापस समझ लो, सब याद हो जाएगा, फ्री में वापस देखना। हाँ, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बस 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 बस, फुल अमाउंट आया तो क्या होगा बेटा, फिर बैड डेट्स रिवर्स हो जाएगा। यस, नो नो नो, ओपनिंग स्टॉक में चेंज हो जाएगा। Anticipated loss. No, abnormal loss is different. That I will tell you later. Wait, abnormal loss we'll do later. 35 is our assumption, nahi, it's a market value. प्रतीक ने, oh shit. ठीक है, तो ठीक है बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, चलो। ओके, अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इंटरेस्ट कॉस्ट, सी आई incurred some interest, for example I am producer of pen manufacturer, so my cost are raw material, correct है, wages I have to pay, direct expenses I already told you, direct expense, फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंस है,
my expenditure is administration overhead plus selling and distribution overhead plus interest because I have taken loan for doing that business. मैंने लोन लेके ये इंटरेस्ट किया हुआ है. Try to understand the concept. मैंने लोन लेके ये बिजनेस किया हुआ है. So I have to pay interest. I have taken a loan and I paid interest on that. So interest is also my cost. Say yes or no. Interest is also my cost. Correct है? अरे इंटरेस्ट भी कॉस्ट है ना आपकी. Okay. So interest is also my cost. Now friends, if you are paying interest from your pocket, but while doing inventory valuation, see, this is expenditure. No doubt this is expenditure. But while recording my closing stock, suppose this expenditure is 1 lakh for 10,000 units. All these expenses. But up to factory overhead, my expenditure are 60,000. And remaining interest, administration overhead, selling and distribution overhead are 40,000. So while doing inventory valuation of 60,000 divided by 10,000 units, I left with 3,000 units. 7,000 units I sold. So I should not consider interest cost in inventory valuation. See, I'm telling you once again. Interest is considered in P&L debit. Interest is a kharcha, is an expenses. It is considered in net profit. But don't consider in inventory valuation. Inventory के valuation में consider मत करो. Don't consider it in the inventory valuation. So one more time. Interest ये आपका खर्चा है. नेट प्रॉफिट में हम लोग माइनस करेंगे. While calculating profit, हम लोग कंसीडर करेंगे. While calculating profit, consider at the time of profit calculation, income minus expenses. But don't consider in inventory valuation. Inventory valuation में नहीं consider करना है. Don't consider it. Remember. So इसको consider नहीं करना है. Understood? Say yes or no. Interest cost is never considered for calculation of closing stock. But there is one exception, very, very important. Exception of interest on qualifying asset. Qualifying asset में ये expenses का क्या है बेटा? याद रखो. This is exception. Now what is qualifying asset? Now this is a new term for you. Understand what is qualifying asset. Qualifying asset, you will understand it in accounting standard 16. Where you will understand accounting standard 16 at intermediate level. But beta, I will make you perfect not for intermediate, at foundation. You should know the word what is qualifying. Qualifying का meaning समझ लो. प्रियंका, once please watch this session once again. प्रियंका, लेक्चर को वापस देखने का. पिछले लेक्चर में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं कंसिडर किया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कंसिडर किया था, इंटरेस्ट को भी कंसिडर नहीं करना है. एक बार वापस से लेक्चर देख लेना, पिछले वाला. ओके बेटा? यस. ध्यान में रखो. अभी मैं क्या बोल रहा हूं समझ लो. ब्रेक मिलेगा आफ्टर दिस प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन. आफ्टर दैट यू विल गेट अ ब्रेक. So wait for 5 minutes now, 5 to 10 minutes.
Qualifying asset क्या होता है? Qualifying asset means an asset which takes a substantial time to get ready for its intended use. Oh. Sir, wait. Qualifying asset means asset which takes time to get ready. Get ready. Sir, AC inventory. AC inventory. Asset means inventory is also asset, which takes substantial time. Substantial time means substantial, मतलब ज्यादा time. Sir, pen manufacturing, 1 day process, 2 days process, 3 days process. Car manufacturing, 10 days process. Wine. You know the word. Old wine is always better, costlier. Wine is an example. Wine is an example for qualifying asset. Okay. So wine जब आप बेचते हो, and for wine you have taken a loan. For manufacturing of that wine, you have taken a loan, and that interest will be added to inventory. That interest is added to the inventory. Remember, so not for all assets. जो एसेट बनने के लिए टाइम लेने वाली है ना बेटा, जो एसेट बनने के लिए टाइम लेगी, वही एसेट में आपका इंटरेस्ट ऐड होगा. सो पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन लिया है? नो. कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग? नो. कार मैन्युफैक्चरिंग? नो. Wine manufacturing? Yes, because it's a qualifying asset. It's a qualifying asset. Loan is taken for business purpose or qualifying asset. Business purpose के लिए होगा तो don't add it in closing stock. Qualifying asset means substantial period लेता है. Asset which takes a substantial time. Added. Yes. चलो, take a screenshot. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलो, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा. इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस एक्सपेंस बेटा. इंटरेस्ट इज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर. हाँ, एसेट विच इज अंडर डेवलपमेंट. इन्वेंटरी, हाँ, इन्वेंटरी, नॉट एनी अदर एसेट. फिक्स एसेट का तो सवाल ही नहीं है. इन्वेंटरी मीन्स व्हाट बेटा? व्हाट यू आर गोइंग टू सेल. Inventory means your product that you are going to exchange, sale. Sir, qualifying asset को 1 साल लगने वाला है. How much time? It takes more than 1 year. ठीक है. सर, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बोल रहा हूँ यार. पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ. अच्छा, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो, मूव टू नेक्स्ट. Take a screenshot. Sorry, I forgot to take debited P&L and debited to stock. Now take a screenshot. Previous screenshot, please delete it. Storage cost. Now understand storage. Now this is very, very important. Sir, storage means where your go down cost. So go down, remember, go down mein, now go down is of 3 categories ka inventory. You keep it in go down. 3 types of category. One raw material, one WIP, and third one is finished goods. Now finished goods you kept it in the go down for sale purpose. Go down में क्यों रखा आपने finished goods को? For sale purpose. Raw material, WIP, and finished goods. Remember, go down cost of raw material, where you kept your raw material and WIP, is added in the inventory valuation. So inventory valuation में material, labor, direct expense, the factory overhead, interest on qualifying asset, interest only on qualifying asset, and storage of what? Storage cost. So गोडाउन का जो आप cost भरोगे बेटा, गोडाउन के बहुत बड़े charges होते हैं. One of our client, he gets daily 4 lakh rupees rent per गोडाउन. बड़े बड़े गोडाउन होते हैं. आप जाते हो ना मार्केट में, देखते हो जब आप आउटसाइड आपके सिटी से बाहर जाओगे तो ऐसे गोडाउन दिखेंगे आपको. वो गोडाउन होते हैं ना, बड़े बड़े कॉस्ट होते हैं इधर. So raw material and WIP, you will consider it as a part of closing stock. उसको closing stock का part लेना है.
you will consider it in the closing stock. But finished goods, it is not considered in the valuation. Why? Because finished goods is now available for sale. ये available for raw materials for production, work in progress for production. So logical है. But finished goods is not, beta, go down for finished goods. Now you are going to sell it and it is a distribution expense. So distribution expense we won't consider. Raw material and WIP production cost. So recall this principle. Inventory valuation में go down. First, you have to check why this go down rent is paid for raw material. Yes, then you will consider as a part of closing stock. WIP, yes, you will consider. Finished goods रखा है, go down में finished goods रखा है and rent pay किया. No, I won't consider that in inventory valuation. Understood this principle? Yes. Now third one. See beta, this is technical terms. This needs lot of beta understanding. यहाँ पे गिव अप मत करो, इसमें थोड़ा समझ के लो मेरे खर्चे क्या क्या है और मैं इन्वेंटरी में क्या क्या कंसीडर करूंगा. All are these my expenditure, no doubt. All these are out of my pocket. But should I consider it in the inventory valuation? No. तो ये नहीं कंसिडर करना है तो उसको बोलेंगे ये. आया समझ में? इजी छे. यस. पैकिंग एक्सपेंस. अच्छा लिख लो. स्टोरेज कॉस्ट का लिख लो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट. WIP और रॉ मटेरियल का स्टोरेज, यस विल कंसीडर. फिनिश गुड्स का वी वोंट कंसीडर. आर यू एंजॉयिंग इन्वेंटरी बेटा? गॉट द लॉजिक. वेरी गुड बेटा निशी, गॉट द लॉजिक. यस, वेरी गुड बेटा. गिव अप मत करो. नाउ पैकिंग एक्सपेंस. Packing. Now, beta, there are two types of packing: primary packing, secondary packing. Primary packing means which is essential. Beta, your what I can call it for? हाँ beta, Cadbury. Cadbury में suppose now you have वो कौन सा आता है? Celebration. You need that boxes to keep all Cadburys together. That is the primary packing. But you beta wrapped it by some other things, matlab, to make it attractive. For example, mobile, simple mobile cover charge your that box, primary packing box is okay. But to make it attractive, if you have a separate box for Apple, Samsung mobile, so they have beta very attractive packing. Okay, so that is a secondary packing. So primary is essential, तो रखना ही है. Okay, and secondary bit beta, it is not essential to make it attractive. So compulsory to attract and advertise. So we will record it in trading account. So trading account में it recorded in P&L account. Considered in the inventory valuation. Primary का जो है ना packing, primary packing you will consider as a part of inventory, not considered as a part of inventory. So this is kharcha. Secondary packing is, though it is an expenditure, but it is not considered in the closing stock valuation. Remember that it is not considered in the closing stock valuation. Chalo, take a screenshot. लीजिए screenshot. And here we have finished with inventory principles of inventory valuation. So quickly summarize all these points. चलो अभी आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं क्या देखो. So till now what we have completed, if you can answer it, all these 7 questions, then better you understood it very well. My friends, we will summarize all these points now. See, can you answer all these questions? Then you understood in 1 hour all these points. चलो, प्राइमरी पैकिंग होगा तो हाँ, फिनिश गुड्स का स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड. बस सलोनी, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जहां पे फिनिश गुड्स रखा है वो कॉस्ट कंसिडर नहीं करना है. बस अभी आप वापस से ये लेक्चर देखा करो फिर
नंबर 1, जिया जिया तो क्विज के लिए रुकी रहती है। नहीं, फिर उसके लिए ट्रेडर के लिए नहीं आएगा बेटा। ट्रेडर के लिए फिनिश गुड्स के जो गोडाउन कॉस्ट है ना, वो नहीं इन्वेंट्री में ऐड करेगा। वेरी गुड बेटा शालिनी, वेरी गुड बेटा। आपने लिखा है ट्रेडर के लिए जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो भी इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं बेटा। वेरी गुड। ट्रेडर कभी भी गोडाउन कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ऐड नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरर सिर्फ करेगा, वो भी रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का। वेरी गुड बेटा, क्या बढ़िया थिंकिंग हो चुका है आप लोगों का। साइलेंट कॉस्ट, साइलेंट कॉस्ट कौन सी होती है भाई? ये सुंदरन जी कुछ अलग ही लेवल पे बात करते हैं। यू ऑलवेज थिंक्स इन डिफरेंट वे। व्हाट इज साइलेंट कॉस्ट? आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। चलिए, सो लेट्स आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट? चलो जल्दी से, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। हु इज आंसरिंग वेरी फास्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स? Types of product? The answer is टू टाइप्स, मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। सबसे तेज आंसर दिया है कोमल ने, विथ टाइप्स। सेकंड, मेन प्रोडक्ट is recorded at in closing stock. Main product is recorded at. Some students answered 3 types. नहीं बेटा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट था। यस, मेन प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड एट। who answered very fast? Main product is recorded at. You can, if you answer it na beta, your confidence is going to boost. Cost or NRV, whichever is lower. Whichever is lower. Very good. Very good. Third one. What is the formula of net realizable value? What is the formula of net realizable value? If you answer all these questions, beta, you understood this chapter very well. NRV is selling price minus selling expenses. Selling price minus selling expenses. Fourth number question. Cost to be considered in inventory valuation. Inventory valuation. A, B, C. 3 questions. Interest, storage, packing. Let's see the answer. Yes or no? Interest, storage, and packing. And which one and which is not one is included in the inventory valuation. So this is a summary of our 1 hour session. You can write like A, B, C in your answer session. A, B, C. Interest, no, not considered. Exception, qualifying asset interest. Interest on qualifying asset.
Storage cost, raw material WIP, yes. Finished goods, no. Packing, primary, yes. Secondary, no. And this is how you understood this chapter very easily. Now, after this one, I'm going to start with very important session, which is called as FIFO, LIFO, and weighted average. Okay. So today we are going to finish with FIFO and LIFO. And if time permits, then weighted average. Okay, so next is very simple. Now we have done with beta 80% of this topic. Now we left with only 20% concepts. Bas khatam hai chapter, and I hope you enjoyed till now and you are not going to miss after break. Break ke baad aap miss nahi karoge, and we are going to start at 12:30. 12:30 को हम लोग आएंगे और वापस से start कर देंगे. चलो, take a break, विनू जी.
Welcome back, welcome back, welcome back once again, my champs. Chalo. So now let's start with your next part of methods of inventory valuation. This is the last part for today's session, and then next session we are going to start with normal loss and abnormal loss. After finishing of methods of inventory valuation, okay, inventory valuation में historical methods and non-historical methods. Now please concentrate for next 10 to 15 minutes. Very, very important. चलो याद करो, याद करना है historical methods, non-historical methods. Historical methods में not interchangeable. When you are interchanging goods, it is not interchangeable. And second one, one minute. Not interchangeable and interchangeable. Not interchangeable में बेटा specific identification method. पहला मेथड है specific identification method. Sir, what is specific identification method? Not interchangeable मतलब बेटा no abda kadabda. Okay, one page you exchange with another page. It's not possible because you can identify which page is of which amount, with amount. Okay, so there is a tag. Specific identification method में क्या होगा? There is a tag. You can identify कि this page is of 1 rupee and this page is of 1.5 rupee. You can easily identify with page number, with page cost. So it is called as specific identification method. Very simple. Second one, first in, first out. Now what is first in, first out? Weight. Last in, first out, weighted average and simple average. And non-historical method, we have standard price method, and second one is adjusted price method. Okay, so take a screenshot. चलो नाम को याद करते हैं. 3 times we will recall these names. Historical method, speak loudly, not interchangeable, interchangeable. Not interchangeable, specific identification method. Interchangeable, FIFO, first in, first out. LIFO, last in, first out. WA, weighted average. SA, simple average. Non-historical method, standard price method, and adjusted price method. Standard price method, SPM and APM. SPM, APM. SPM, APM. Historical, SIM. Not interchangeable में SIM याद रखना. Specific identification method, SIM. Specific identification method. FIFO, first in, first out. LIFO, last in, first out. WA, weighted average. SA, simple average. SPM, APM, standard price method, adjusted price method. In non-historical, non-historical में आएंगे. Take screenshot बेटा. Historical में याद करो. Historical में interchangeable, SIM. Historical, sorry, not interchangeable, SIM. Specific identification method. Interchangeable, FIFO, LIFO, WA, SA. Standard price method for non-historical, SPM, APM. चलो याद हो गया? Fast. One more time. Everyone in comment section. चलो याद करो. With shortcuts याद करो. Historical method, 2 parts. Not interchangeable, interchangeable. And then non-historical, only 2 methods. Not interchangeable, SIM, specific
आइडेंटिफिकेशन मेथड, नॉट इंटरचेंजेबल के बाद इंटरचेंजेबल, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, WA weighted average, SA simple average, non historical last part, SAM sorry SPM and APM. SPM and APM, here S for standard price method, APM for adjusted price method. SPM and APM. Easy છે, not interchangeable. Interchangeable. Hmm. Mm-hmm. Yes. Sir, how to match my speed? By doing revision, Avesh. Avesh भाई, revision करो. Historical, not interchangeable. Seam, interchangeable. FIFO, LIFO, WASA, non-historical method. SPM, APM. इजी छे, याद हो गया सबको? टाइम दे रहा हूं, लर्न हो गया क्या? यस सर, पूरा लर्न हो गया. वेरी गुड. चलो, वेरी गुड. Not interchangeable, beta. Now let's understand one by one method. If it is not interchangeable method, in that case, it will be specific identification method. क्या बोलते हैं उसको? Specific identification method. Remember. Yes, Pooja Prasad, I will use more English, but what happens when I'm not taking it in the revision one in Hindi, some students, they are not getting it. I know paper has to be written in English, but better explanation as a teacher, I have to give it in both languages. See, I never miss your first understanding. It is always in English, but better when I'm taking fast, quick revision, that I normally take it in Hindi. Please understand that, because there are many students who are not from English medium or convent school students, not from CBSC or ICSC. So these students better, they are comfortable in Hindi, and that's why we are taking in both languages. Try to understand it. Okay. And I know it is very, disturbing when I use Hindi sometimes for South Indian students, better, because you may think that it is like foreign language for you, because from, yes, better, childhood, you never speak in Hindi. So I can understand it, but better, please try to understand other part of the country. They better normally tries to understand it in Hindi, means their language is Indian, they are very comfortable in Hindi. So please understand. ठीक है, चलो. So specific identification method. Let's understand what is specific identification method. Understand it quickly. Practicable only for specific goods. When there are no same goods. Now it can be very easily identifiable. These two different color pens. So this pen is costing me 12 rupees. This pen is costing me 10 rupees. So that I can easily understand what is the cost for these two pens. Okay. ठीक है, चलो. So specific identification method, it is inconvenient for interchangeable goods, but obvious, not interchangeable. That's why you are written over there. And physical tracing is required. So price tag is there. Price tag is there, easily understandable. Chalo, so take a screenshot. Specific identification method. Specific identification method only for theory.
100 पेजेस के बुक में ओनली फॉर थ्योरी, नो प्रॉब्लम्स. इंटरचेंजेबल, ओके. क्या हुआ आवाज को? एनी डिस्टर्बेंस? आवाज बराबर आ रहा है ना? एनी साउंड प्रॉब्लम? कुछ आ रहा है क्या प्रॉब्लम आवाज में? क्लियर है ना? हाँ. दिस हैज टू बी राइट, यू हैव टू राइट इट इन 100 पेजेस बुक. चलो, इंटरचेंजेबल. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरचेंजेबल. इंटरचेंजेबल में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन सो यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट इट वेरी इजी. ओके, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 11. ठीक है. फर्स्ट वन conceptual clarity and then exam way. So write down 400 pages book. First write down concept way, then we will write exam way. Chalo, write down ilu 11. Ilu 11. In your 4 index of 4 pages, 3 pages beta. Index को 3 pages छोड़ो. Leave 3 pages for index. Ilu 11. Page 4.17. 3 pages for index. Concept way. Date. Receipt. Issue. Balance. ठीक है. And in receipt you have 2 columns, quantity, rate. Bas. This is concept way. Quantity and rate. Exam way I will give you. Write down these columns. Date. Receipt में you have 2 columns. Issue बड़ा रखो. Balance is also big column. Date small column. Receipt में you have quantity and rate. चलिए. So write down. $400 pages book. 400 pages book. You are writing illustrations तो 400 pages book में आ जाओ. You do not have any opening stock. First Jan. 100 units. Purchases 30 rupees. So purchase means receipt. 15 Jan. Now this is first in first out. ऊपर लिखो first in first out. So you received 100 quantity at rupees 30. It's very simple. Okay. You issued 50 units. So your quantity is 100 and you issued 50 oblique. Now still there is a balance of 50. 100 में से you issued 50. Okay. So this is your lot 1 and you issued 50. This is also from lot 1. You can write it on question. Lot 1 issued also lot 1. Now you purchased. So this is lot 2. First Feb.
After one line, purchase 200 units at rupees 40. 200 units at rupees 40. Now you issued on 15th Feb. Don't write date. 100 units. So this is lot. Now tell me, lot 1 में कितना बाकी है? Lot 1 में 100 units minus 50. So lot 1 का balance is lot 1 का balance 50 and lot 2 में से 50. So lot 1 में से जाएगा 50. So balance first in first out. So lot 1 में से minus 50. From lot 1 it is minus 50 and again from lot 2 50. Okay. So still there is a balance of lot 2 150 का balance है. And here on 20th Feb it is 100 units. It is from lot 2 and you left with 50 units. Very simple. One more time. One more time. So concept way over. Now exam way. So you should all 100. Here total is 100 and here total is 150. 100, 150 is a total. Okay. So exam way. First in, first out. It's very simple. First in, first out. Easy or difficult? देखो आपने पहले 100 यूनिट्स परचेस किए, मैंने इधर 100 लिख दिए एट 30. फिर मैंने 50 यूनिट्स उसमें से दे दिए. सेकंड डेट 50. तो 50 किस में से जाएगा? लॉट 1 में से. दिस इज लॉट 1. अभी भी कितना बाकी है? 50 बाकी है. फिर वापस 200 खरीदा. यस 200 एंड 40. इशू कितना किया? 100. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. पहले लॉट से 50 जो बचे हुए हैं एंड दूसरे लॉट से 50. अभी दूसरे लॉट में 150 बचे हैं. 150 में से वापस 100 दिए तो माइनस 100 एंड यू लेफ्ट विथ 50. एकदम सिंपल है. इजी और डिफिकल्ट? इजी और डिफिकल्ट? सिंपल. रिमेनिंग स्टूडेंट्स बेटा, नाउ एग्जाम वे. राइट डाउन एग्जाम वे. इन एग्जाम वे बेटा राइट डाउन कॉलम्स. कॉलम्स राइट डाउन. पहले लिखो श्रीराम मिल्स. श्रीराम मिल्स इन्वेंटरी वैल्यू एज ऑन 31st March 20. Basis first in first out. First in first out. Columns first try to understand, then draw. I will tell you how to draw this. Date, receipt. In receipt you have 3 columns: quantity, rate, amount. Then you have issue. You can take on 2 pages if your handwriting is big. Quantity, rate, amount. Balance, quantity, rate, amount. 8 lines. अभी देखो राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करने का. ऑलवेज रिमेंबर राइट टू लेफ्ट. ड्रॉइंग इज मस्ट बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी. ओके.
Yes. Quantity rate amount, balance. Balance. First Jan. 130. Yes, you can write over this. 133,000. Okay. Issue nothing. So on 1st January balance is 133,000. Over. Now, after one line, 15 Jan, issued 50 units. Okay, so draw one line. एक लाइन ड्रॉ करो. Okay. After one line, beta. Now you have 15 Jan, na? 50 units issued. So 50 units you issued from first lot. So here pencil से लिख देना -50 from first lot 31,500 and you left with 50 31,500. So you left with 50 units from lot 1. Next. After 15 Jan, 1st Feb. 1st Feb, you purchase 200 units. 200 units at rupees 40. 8,000. So 50, 30, 1,500, 200, 40, 8,000. Okay, so lot 2. Lot 2 is 200 units. Now, 15th Feb. 15th Feb, 100 units. 100 units means out of this pencil से लिखना है 50 and out of this 50. Okay. Lot 1 first in first out 1,500. Lot 2 50 units 40 rupees and 2,000. So you left with 150 units in lot 2 and your amount is 6,000. Easy. Now you left with only lot 2. Last one. Last one. 15 Feb के बाद 20 Feb 100. 100. 4,000 and you left with 50, 40, 2,000. Correct? ठीक है? So you left with 50 units, 40 rupees, 2,000. So your value of inventory is rupees 2,000. So value of inventory as on 31st March 2,000.
दिस इज एग्जाम वे. अंडरस्टूड बेटा? नाउ सेम थिंग you can do for last in first out. प्रियंका कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा. ये इतना सिंपल है बेटा कि सीए का कोई भी बच्चा, सीए की भी जरूरत नहीं है इसको. कौन से लॉट में से पहली बार जो आया उसमें से जा रहा है, तो इसमें बेटा प्रियंका कैसे बोल सकते हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग? मतलब आपको लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा ना बेटा. ये आप मुझे बताओ, कुछ है क्या इसमें कि पहली बार हमने लॉट लिया तो रिसीट में आया, परचेस किया तो इशू किया तो पहले में से पहला जाएगा. अभी इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा प्रियंका? तू ही मुझे बता. मतलब हमने सीए की लेवल पे पहुंचना है, क्या सीए आपके लेवल पे पहुंचेगा? थोड़ा सा बताओ बेटा. मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, पर मैं एक हकीकत बता रहा हूं बेटा. ठीक है, नहीं समझ में आया, पर इतना कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो बेटा रास्ते का लेमैन भी बता देगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है. तू मुझे बता बेटा, अपने लेवल इतनी नीचे आ गई है क्या? प्रियंका कैसे सीए हो पाएगा? अभी तो ये डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ऐसे टॉपिक सीखने, एन्युटी, ये तो कुछ भी नहीं है. पहली बार आया पहली बार जा रहा है भाई. और कितना इन्वेंट्री बचा? तो लॉट 2 का इन्वेंट्री बचा मेरे पास, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ये इन्वेंट्री मिक्स हो गई तो रेट्स अलग अलग है, 30-40. सो हमने क्या किया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल वी फॉलोड, कि फर्स्ट वी यूज दैट इन्वेंट्री. सो दो दे गेट मिक्स, वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम, वी आर यूजिंग FIFO मेथड. Interchangeable when inventory gets mixed, so it's very difficult to know whether it is from 30 or whether it is from 40. So we followed first in first out method. First in first out whenever you are issuing, first out. So you left with second lot of the inventory. Your first inventory, lot 1 inventory gets finished. पहला लॉट आपका खत्म हो गया बेटा. आपने एक ही चीज लाया तो 30 रुपए से भी लाया, उसके बाद प्राइस महंगा हो गया, वही चीज 40 रुपीज का हुआ. दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए. इन्वेंटरी दिखने को सेम थे. सक्षम कैसे बोरिंग है रे बेटा? कैसे बोल सकता है तू ये टॉपिक बोरिंग है? कितना इन्वेंटरीज इन रियल लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, because chartered accountant only knows how to calculate inventory. You do not have bill. Inventory is an adjustment. What is adjustment? Adjustment मतलब closing stock की हमें amount निकालनी है. जर्नल एंट्री किसकी होती है? वी कैन इजीली फाइंड आउट बिल टू बिल से जो मिलता है वो जर्नल एंट्री है. And inventory is an adjustment because we are not getting any bill for inventory. We calculate it as a chartered accountant. बेटा एग्जाम में इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000. फिर यू आर गिविंग इफेक्ट्स. वन इफेक्ट इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट एसेट साइड. बट बेटा हाउ टू कैलकुलेट दिस? दिस इज कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रेन. ही इज गोइंग टू कैलकुलेट दिस. He is going to consider inventory. He is going to calculate adjustment, जिसको बोलते हैं when you are calculating anything. When bill is available, it is simple journal entry. When bill is not available, it is called adjustment. Many students, they are not aware in 12th standard what are adjustments. Adjustments in final accounts. You solved it, na? Adjustment, depreciation, we calculate it. So we need expertise while calculating it. We do not have separate voucher, payment का receipt, expenditure का bill, ऐसा कुछ नहीं होता है. उसको बोलते हैं adjustment entry. And as a CA, we are calculating this. What we consider raw material, wages, direct expenses. What is bore in this chapter? उल्टा enjoy कीजिए यार. बोर बोला ना कुछ नहीं होता फिर. मुझे बहुत बुरा लगता है when students are saying this is something I don't want to. अरे चॉइस आपकी है क्या? आप रियल लाइफ में जाओगे, there are n number of clients that you are visiting. Everyone will ask you for separate guidance. You should be aware of all these things. ऐसा आपको चॉइस होगा क्या? ये क्लाइंट में मुझे ना, हाँ मुझे, मैं इनका BRS नहीं करूंगा,
मैं इनका इन्वेंटरी मुझे नहीं अच्छा लगता था. Inventory was in my option. I don't want to learn that. I won't take that client now. Closing stock valuation client, I don't want to take that client. I won't calculate inventory. ऐसा होता है. You should be aware of knowledge. इतना सिंपल होने के बाद कोई पूछता है सर नहीं समझ रहा है. व्हाट नहीं समझ रहा है? ओके. P4. It's already done in 11, 12. Very good. Chalo. Bus. Now today's homework. Now you will calculate LIFO weighted average basis. Now go read weighted average basis and solve. Now today's homework. Yes, I'm giving you today's homework. You have to complete till ILU 5 and ILU 12. So 2 to ILU 5 and illustration 12 is your homework. Okay, 2 to 5. Yes. ठीक है. हाँ. Yes. 2 to 5 and ILU 12 ये आपको फिनिश करना है. यस बेटा स्नेहा. चलो FIFO over. So now you will read theory of LIFO, last in first out, and you will tell me in next session weighted average are you able to calculate. If you don't calculate, if you are not able to calculate it, I will take it in the next session. Don't worry, I will give you the shortcut. मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगा. हाँ कैलाश. 15 फेब में से 100 50-50 में गया. 15 फेब का 50 पहले लॉट से गया, दूसरा 50 दूसरे लॉट से गया क्योंकि ये लॉट खत्म हो गया. और बाद में सिर्फ बचा एक ही लॉट 150 का, उसमें से 100 गया. तो 100 गया तो बचा कितना? 50. ये क्या है बेटा मतलब हर्षिता? 15 फेब और इसमें क्या डिफिकल्टी है? ओके. नाउ वी आर सॉल्विंग वन इलस्ट्रेशन बेटा. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लास्ट टीवाई के 4. यस आई प्रॉमिस्ड यू कि आज टीवाई के 4 लूंगा मैं. चलो लास्ट लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. एक 5 मिनट बेटा, 5 मिनट में डोंट गिव अप. आप हारने वाले बच्चे नहीं हो. यस. चलो. So those which are very simple beta we will do directly. Those difficult one you can write it. Okay, correct entry, wrong entry, rectification entry. चलो. Very good अंकित, अंकिता. A merchant trial balance. चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आज का. एक लास्ट क्वेश्चन आज प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 4 टीवाई के 4. Yes beta, average method I will tell it in next session now. Now please come for TYK 4. Very important question. ये एग्जाम क्वेश्चन आया है तो ये एग्जाम में आ सकता है. डोंट गिव अप फॉर दिस क्वेश्चन. A merchant trial balance as on 30th June 2020 did not agree. Okay. The difference was put in the suspense account. Okay. The total of the purchase book of one page 4539 was carried to next page as 4593. Purchase matlab debit. Debit 4539. You carry it as 4593. So it should be debited, should debit, but this is debited. Debited. हमने debit ज्यादा दे दिया. So more debit, more debit. Now cancel. Cancel rupees कितना? 4593 minus 4539.
What is the difference? 54. 54 extra debit. Extra debit. It should be debited by 4539, but extra debit of 54. Now cancel it. Cancel कैसे करना है? Credit. Cancel कैसे करना है? Credit. Suspense account debit to purchase. Suspense to purchase. See the answer. Suspense. TYK. So see, suspense to purchase. And instead of purchase, during the next trading period. So next trading period means nominal account. Nominal account है तो P&L adjustment. So instead of purchases, to P&L adjustment. Easy entry, suspense to P&L adjustment. So entry number 1 clear. You can take a screenshot afterwards. Suspense to purchase. Second question. A sale of rupees 573 was entered in sales book and 753 and posted to the credit of customer. Oh, देखो. Debtors to sales. What should be the entry? Debtors to sales. 753, 573, 573. Debtors to sales. But चलो मैं लिख के बताता हूं, मतलब इजी जाएगा. Correct entry. Debtors to sales. You can take screenshot afterwards. Just try to understand. Debtors to sales 573. But what happened? You credited sales by 753. 753. And also credited the customer account. Oh, matlab two mistakes. Two mistakes. Credited the customer account. To customer, to debtors, 753. Suspense. 1506. अभी क्या करेंगे? डेटर्स को रिकॉर्ड करेंगे. डेटर्स डेबिटेड. You want 573 and you have credited 753. So debtors को पहले तो 573 से आपको डेबिट चाहिए and cancellation of 753. Correct? So 573 debit wants and 753 cancellation wants. 1326. Suspense cancelled. 1506. And sales I want 573, but I credited 753. So I will cancel more debit, more credit. 753 minus 573. What is the amount? 180. So 180 से debit देना है. IMP question, mark it as IMP. Yes. IMP. Both are IMP. You can write it in your 100 pages book afterwards. See the answer? Yes. And now, customer account debit, P&L adjustment account debit. So instead of beta sales, sales के बदले में आप किसको डेबिट दोगे? P&L adjustment. Easy. 1506. Correct. Take a screenshot afterwards. Next one. Third one. A return to creditor 510 was entered in return inward book. However, creditor's account was correctly posted. Very simple. Return to creditor means purchase return. So creditor's account debit to purchase return. Return को credit balance आएगा, creditor को debit. Creditor's account में correctly posted. Now give credit. So suspense to purchase return. Okay, so ये देखो. It's very simple.
creditors to return outward, but you debited creditors correctly. So creditors correctly, and you want to cancel suspense. So suspense to P&L adjustment. Suspense को cancel करेंगे to return outward, but return outward is a nominal account. तो to P&L adjustment. Entry is very simple. Creditors to return outward. उसके बदले में आपने किया return inward account debit, creditors account debit to suspense. So entry will be suspense to P&L adjustment. खत्म. रिटर्न आउटवर्ड में होना चाहिए था. यू हैव रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड. वन मोर टाइम. सो एंट्री शुड बी क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेस रिटर्न मीन्स रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, बट यू रिकॉर्डेड एज क्रेडिटर्स को करेक्टली डेबिट दिया, बट यू डेबिटेड सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट टू सस्पेंस. 510 510 510 510 1020 सस्पेंस डेबिट क्रेडिटर्स करेक्ट. दो बार 2 करेंगे, बट 2 P&L एडजस्टमेंट, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट्स. 1020. Very simple. Yes. Keep patience. Last 3 entries. Cash received from C Das was posted to debit of G Das. Very simple. ये भी IMP था. तीसरा, cash received from C Das posted to debit of G Das. Debit मतलब cash to C Das. Cash to C Das कितना? 620. But you debited G Das. Debit and cash is also debit. And to suspense 1240. So suspense को cancel करेंगे. Cash correct. To C Das to G Das. 620 620. See the answer? Yes. Suspense to C Das to G Das. Correct. Fourth one is simple, but students are normally making mistake. Either box करो. Debit. Basics must be clear. Cash to C Das, you debited. Cash account debit. G Das account debit to suspense. Easy. Goods worth rupees 840 were dispatched to the customer before the close of the year, but no invoice was made out. Dispatch कर दिया. So very simple. Customer to sales. So correct entries is simple. So no invoice. So invoice नहीं रेज किया तो no entry. So गलती से क्या हुआ? No entry. But you should entry debtors account debit to sales. Correct entry. No entry, and therefore debtors to P&L adjustment. Simple one. Next one. Goods worth rupees 1000. Now this is IMP. For this you need a separate chapter. Okay, but now you will understand it very easily. See, goods worth rupees 1000 were sent on sale or return. Means goods are sold or return. Return मतलब आ भी सकते हैं. So it is not sale. So it is not actual sales. It is not actual sales. Remember, it is not actual sales. At the close of the year, the customer had the option to return the goods. So अभी भी उसके पास option available है. Sale price is 25% above cost. Now see, cost, profit, sales. Cost, profit, sales. 25% above cost. Now in next session, I'm going to explain all these things. Above cost or on sales, it's a different thing. So 100 ka mal, cost is 100, then you are selling it at extra 25 on cost, not on selling price. So 100, 25, 125. Just note down it. In next session, I will explain it in detail in inventory valuation. Goods worth rupees kitne ka tha? 1000. So what is the cost of these goods? Cross multiplication. 1000 into 100 divided by 125. Answer is 800.
नाउ सी बेटा, दिस इज नॉट द एक्चुअल सेल्स. सो सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है तो वी विल कैंसल द सेल्स. सेल्स टू डेटर्स, sales to debtors. This is not sales because this is on return basis. And second entry, goods lying with customer, because these goods are with customer. It's like closing stock. It's like closing stock to trading account. Now these entries you have to understand it in chapter number 6. Just note down, this is IMP 1 and you will understand it after chapter 6. चैप्टर 6 के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो डोंट वरी, रिकॉल दिस एंट्री. सेल्स टू डेटर्स एंड गुड्स लाइंग विद कस्टमर इज अवर एसेट टू ट्रेडिंग अकाउंट. इट्स लाइक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बाय 800. हियर नो एंट्री, सॉरी, हियर एंट्री नो एंट्री. सो यू विल पास 2 एंट्रीज. सेल्स के बदले में इन्वेंटरी लाइंग विद कस्टमर, इन्वेंटरी गुड्स विद कस्टमर, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, देन सेल्स मतलब P&L एडजस्टमेंट, डेबिट 1000 एंड ट्रेडिंग मतलब P&L एडजस्टमेंट, क्रेडिट 800. सो नेट इज डेबिट टू कस्टमर अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट 1000. ये आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज IMP 1. सो ये यू विल अंडरस्टैंड दिस एंट्री आफ्टर चैप्टर नंबर 6. सो हैव पेशेंस, ओके. एंड देन बेटा टेक ऑन कैलसी. सी इन फर्स्ट एंट्री P&L एडजस्टमेंट को कितना है 54 क्रेडिट. टेक ऑन कैलसी 54. देन डेबिट 180 माइनस 180. 1020 क्रेडिट प्लस 1020. नेक्स्ट एंट्री नो P&L एडजस्टमेंट. नेक्स्ट एंट्री 840 क्रेडिट प्लस किया. नेक्स्ट एंट्री 200 डेबिट माइनस 200. सो यू लेफ्ट विथ 1534 क्रेडिट बैलेंस. यू स्टार्टेड विथ क्रेडिट ना, पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव है तो क्रेडिट है, क्रेडिट है तो अभी डेबिट देंगे. सो जीरो करेंगे टू कैपिटल अकाउंट. दिस इज अ ट्रांसफर एंट्री. इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एंट्री ऑफ P&L एडजस्टमेंट, ट्रांसफर एंट्री. सो वी हैव फिनिश विथ दिस प्रॉब्लम. प्लीज गो थ्रू दिस प्रॉब्लम. दिस इज IMP 1. सो मेक श्योर you will rewatch this session and you can answer it. Yes, 6 number is also IMP. 6 number is also IMP. So many IMP entries, 1, 2, 3 and 6. 4, 5 you can solve it. Take a screenshot. थोड़ा फास्ट हुआ है, but you do not have option. No बेटा, 1000 नहीं है. सेल्स अमाउंट इज 1000, वर्थ इज नॉट कॉस्टिंग. कॉस्टिंग होता तो 1000 इसके नीचे लिखा रहता. कॉस्टिंग है वो, कॉस्टिंग. सो सुंदरन जी, दिस इज कॉस्टिंग नॉट सेल्स. सॉरी, 1000 इज अ सेलिंग प्राइस नॉट कॉस्टिंग. वर्थ है ना, वर्थ. एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर इन 6th चैप्टर. सो डोंट वरी, दिस इज हाईएस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. IMP था. Okay, so take a screenshot, write it in your 400 pages book. Next time we will take last 2 questions, TYK2 and TYK3 in next session, if time permits. Chalo, thank you, goodbye, take care, and please solve all these homework questions. And 4th number question, one more time you can rewatch. Okay, chalo, abhi hum log milenge Monday तक homework complete करो. Maintain your notebooks properly in 2 days. 2 दिन में पूरा notebook maintain करो. Thank you.